Namaskar, good morning. Cordial good morning to everybody. This is Engineer Suraj Singh speaking from Bharat, India on this day, August 24th, 2023. This is now 3:29 a.m. सूरज सिंह हूँ मैं, सिविल इंजीनियर भारत इंडिया से बोल रहा हूँ और आज दिनांक 24 अगस्त 2023 सुबह के 3:30 quality of life, quality of citizen in my country particularly I'm talking about, and it is very, very comfortable to talk about, and it's also very comfortable to listen. If those listen, they benefit. If don't listen, means you don't have any benefit at all. Title which I have given here is starting with without citizenry having any quality, nation cannot grow and achieve any progress. Spelling maybe, I think you can check yourself. I corrected later on. Quality cannot be considered joke, but facts of life. Citizen must know its relevance. L- In life, quality absence means no power. This meaning you can understand. Sometimes in the right spellings, mistake occur in haste. So, my dear friends, first of all, I should say quadrillion, universes honor Karta good morning. I'm saying universes honor. Someone is there, you can use your name. It's no problem to me, but I consider whatever I say that. For me, quality is something that cannot be discarded. And if somebody discards that and doesn't give value to quality, then that person has to suffer, and others have to suffer who use that person's service. किसी भी व्यक्ति को यदि वो क्वालिटी को या गुणवत्ता को नहीं समझता है या नहीं मानता है, तो उस व्यक्ति का अपना नुकसान तो है ही, साथ में उनका भी नुकसान है जो उसके काम को या उसकी सर्विसेज को यूज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे। एक का नहीं, बहुतों का नुकसान होता है इस बात में। क्वालिटी को समझना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको अडॉप्ट करना बड़ी बात है। हम क्वालिटी के बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्वालिटी क्या है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, काम कैसा होना चाहिए। बातें करना तो एक बात है, लेकिन बातों में भी क्वालिटी चाहिए। आजकल बातों की क्वालिटी भी नहीं है, अफसोस तो इस बात का है। और जो क्वालिटी से काम करते हैं उनकी भी वैल्यू नहीं है, सच तो यही है। जो काम क्वालिटी से नहीं करते, मैं जनरल लाइफ की बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट जनरल। In general life, if you talk quality, people just think, oh, this person is something different, only that. Or this person is highly educated, this person doesn't know practicality of life. ये व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा होगा या ये आइडियल है, प्रैक्टिकल नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। बीइंग अ सिविल इंजीनियर, किसी से क्लाइंट से, किसी भी अपने दोस्त से मैं क्वालिटी की बात करता हूँ तो वो सीरियसली सुनते नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही क्वालिटी जानता हूँ, क्वालिटी वो भी जानते हैं। They too know quality, but everybody wants to be practical in life. And what is meaning of practicality? I can't understand. Can you understand? आपको समझ आता है कि व्यवहारिक जीवन क्या है, या जीवन का और व्यवहारिक जीवन का फर्क क्या है? मीन्स अगर आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर लें तो आप व्यवहारिक हैं। आप कहें नहीं मुझे तो क्वालिटी का काम चाहिए, आप आइडियलिस्ट हो गए, आप प्रैक्टिकल नहीं। आइडियल का मतलब आप प्रैक्टिकल नहीं है, आप बिल्कुल वही हैं जो जैसा है वैसा ही चलिए। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, नहीं मैं कर रहा हूँ। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं कहना चाहता हूँ क्वालिटी का मतलब क्या है। क्वालिटी एक दिखावे की होती है और एक सच की होती है। दिखाने को तो हम सब दिखाते रहते। देखिए आपके घर में कोई डिलीवरी आती है, पैकिंग बहुत प्यारी है, बड़ी अट्रैक्टिव है, आप कहते हैं यार कितना अच्छा सामान आ गया। देखा नहीं सामान को, लेकिन पैकिंग देख के आपने क्वालिटी तय कर ली। पैकिंग बहुत अच्छी मिलेगी आपको, और जब आप पैकिंग खोलेंगे तो फिर उसको ऐसा हो जाएगा कि क्या था, कचरा हो गया, वो फेंक देंगे आप ऐसी क्वालिटी चाहते हैं या उसके अंदर जो डिलीवरी आइटम है वो क्वालिटी वाली होनी चाहिए। यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ। मीन्स within that box what you got, that item has been inculcated quality element, or it is just abusive one। हमको ये देखना होगा कि हम जो काम कर रहे हैं
वो काम कितना चलना चाहिए, कितनी उसकी लाइफ होनी चाहिए, परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, हमने जो पैसे उस पर खर्चे हैं, जो रिसोर्सेस लगाए हैं। पैसे का मतलब यहाँ खाली पैसा नहीं है। मनी मीन्स रिसोर्सेस, हमने मटेरियल लगाया, उसमें ह्यूमन रिसोर्सेस लगाया, मैकेनिकल रिसोर्सेस लगाया, उसके कुछ फंक्शंस हैं, वी हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशन, डज दैट आर्टिकल, डज दैट प्रोडक्ट गिव दैट? If that product does not give that, then where is quality? It is only quantity, qualityless one. Means that product is quality deficient, quantitative. That product is in quantity but quality deficient. We have to understand this point. We have to understand that. Now, what's happening in our system in this country? During my time when I was in education, I was in classes, in university institutions to get my education. I'm talking about 1970s, 1980s. Students were very good in education learning, in program learning, not because they were brilliant, but because society was controlled. Teachers were excellent, professors were excellent, atmosphere and environment of society was excellent, parents were excellent. And of course, when you are surrounded by excellent and hardworking or good people, some induction comes to you also, because kid is kid, school going kid, college going kid, all are kids. सब बच्चे जो पढ़ने जाते हैं स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, उनको इन लोगों से, इस सराउंडिंग एनवायरनमेंट से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, पर्टिकुलरली टीचर से, प्रोफेसर से, समाज से। वो इतना अच्छा होता है कि उनका फ्यूचर उसी पर डिपेंड करता है। बोलने के तरीके समाज में, किस तरह से आप किसी से बोलें, व्हाट वे यू एड्रेस योर सीनियर्स, व्हाट यू एड्रेस योर कॉलीग्स, योर मेट्स, योर सोसाइटी, योर पेरेंट, योर रिलेटिव्स एंड नेशन एट लार्ज, दैट कीप्स विद यू, you keep that forever, and that is very important. Even if you are 70 years old, you remember your school teacher, that teacher told me. You don't forget that, but that teacher will forget you. You shall remember that teacher forever if you find some teacher, excellent one or reliable one, or that teacher could provide you or equip you with certain specific knowledge. Nobody forgets that. That's why quality is a very significant one in our country and all over the world. If quality is not clearly understood, I'm not talking of testing quality, I'm not talking of qualitative quality or how quality performs. I'm talking of requirement. I'm talking of naturality. I'm talking of technology. I'm talking of methods. I'm talking of inspections. I'm talking of self evaluation. I'm talking of your own work, how you do that, how you plan that, how you check that, how you react on that, how you find your own mistakes, how you audit yourself, how you criticize yourself, how you laugh on yourself. And likewise, many, many more considerations can be applied. I was talking about education in those days, in my youth, when I got admission in my first standard in 1970, I'm sorry, 1965, or I think not, 1960s, yes, 1960s, 11 classes, school time. I still remember my class one, class two, how otherwise we forget generally what we do, what we work, how we talk, but those infant years memories do not go easily. It's not possible. I think it's for everyone. You remember everything because in those days that was concentration point to learn. That was, child has got free mind and child learns a lot, and that learning is permanent. And that is what I say, we have to learn from there, just like we have to learn from nature. Everybody learns from nature, though formally people don't realize that. You learn from nature, how nature works, you watch that, you take energy from sun, and you see sun every day, and you see night every day, you see seasons every time.
You see how system is working, but you don't realize facts. हमें उस टाइम समझ नहीं आता कि हम सिस्टम भी हमें सिखा रहा है, नेचर भी हमें सिखा रहा है. हम सीखते क्या है वहाँ? Regularity, punctuality, systematic performance, no vacation. We learn that from nature. What we learn: sun works every day, it doesn't change. Earth works every day. We see years, we see months, everything we see. We see 24 hours, repetition or iteration every day. And since this universe was created, or maybe other universes were created, but we don't learn anything. We don't learn. We don't believe in regularity. We don't believe in punctuality. We don't believe in system. While without systems, even person cannot exist. Every beauty, every baby, every person, every animal, or whatever creature on earth or elsewhere, all are bound by system. Everybody's system works. But human knows this very well. It is not that we do not know, but we ignore, and ignorance is very, you can say, very bad approach. If I ignore something, I should know it or I should take care of that, then I do not do my job. In education system, we learn everything. Of course, not in details, but we understand. If I don't work mathematics correctly, my solution cannot come. If I say no, 2 plus 2 is not equal to 4 but equal to 3.5, what shall happen to me? If I don't understand, life is based on mathematics, and life is based on sciences. Life is based on nature, and nature itself is biggest scientist in this world, biggest engineer in this world. We may realize this fact or we may not realize. Whoever designed this universe, of course, we name it God. Whoever God I don't name, but that God is having every potential, must be having. Otherwise, how could that God construct this universe? And it's a question mark to understand. I don't go to what religions say, I go to what I understand. Quality understanding takes whole life, but people cannot understand. We just keep ourselves confined to quality controls, not to quality in entirety. That's what I say. If I am a good citizen of my country, I must be a good citizen. And it doesn't mean that I am citizen for vote only. No, citizen for your country and citizen for your world. First, I am world citizen, though there is no requirement of passport. There is no definition of world citizen anywhere, but ultimately I was born and I am living on earth, which is world. I am living on earth, which is world, and no one can push me out from here. There is no system, there is no body that can push me out from this earth and can say, you go from here to somewhere else. Nobody can say that. It's not possible as well. Yes, death is another part. Death is something else. But if somebody wants me, no, this is not your area, you leave this earth, is it possible? It is impossible. So that is a point we have to understand. After all, why I claim or why I stress that citizen should be qualitative. क्यों कह रहा हूं मैं कि हमारा नागरिक, हमारा सिटीजन क्वालिटेटिव हो. सिटीजन की क्वालिटी होने का मतलब है आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, आप अपने आप को लायबिलिटी में रखते हैं, आप ऑब्लिगेशन भी करना चाहते हैं, लेकिन सही प्रकार से. इंजीनियरिंग में कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखे होती हैं स्पेसिफिकेशंस. स्पेसिफिकेशंस को एम्प्लॉय करना, अप्लाई करना, अचीव करना ही क्वालिटी में आता है. लेकिन हम लोग खराब कर देते हैं जब हम क्वालिटी में नहीं जाते. इंग्लिश जैसे लैंग्वेज है, बहुत सी लैंग्वेजेस हैं. कोई भी लैंग्वेज आप देखिए, कहीं ना कहीं एरर सभी में मिलेंगी. इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश अच्छी लिखी नहीं जा सकती या हिंदी अच्छी लिखी नहीं जा सकती या कोई और लैंग्वेज अच्छी लिखी नहीं जा सकती. वही मैंने कहा, आप कितना सोच समझ के काम करते हैं.
कितनी बात को कैलकुलेट करके फ्रेजिंग करते हैं, वो भी क्वालिटी में आता है। क्वालिटी पर्सन का मतलब यहाँ पे है, क्वालिटी सिटीजन का मतलब यहाँ पे है जो अपने देश को, अपनी ज़मीन को अपना समझे और उसको इम्प्रूव करे। वो जैसी भी है, आपकी है, जब तक आप यहाँ रहेंगे तब तक वो आपको यूज़ करनी है। जब आप यहाँ से चले जाएंगे, आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। समाज को ठीक करना, देश को ठीक करना, विश्व को ठीक करना, मैं ह्यूमन लेवल पे बात कर रहा हूँ, मैं किसी देश के लेवल पे बात नहीं कर रहा। अगर आप करेंगे तो आप गॉड का साथ देंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट अर्थ जो है गॉड की है, सोलर सिस्टम प्रोडक्ट गॉड का है। आपका कंट्रीब्यूशन इसमें कुछ भी नहीं है। ह्यूमन हैज़ नॉट कंट्रीब्यूटेड एनीथिंग फॉर दिस यूनिवर्स, फॉर दिस सिस्टम ऑफ सोलर एंड फॉर दिस सिस्टम ऑफ अर्थ। ह्यूमन हैज़ नॉट एडेड एनीथिंग, abused everything. सो किधर है क्वालिटी? आप अब्यूज कर रहे हैं। और मैं ये बात जब अपने देश के बारे में करता हूँ, ऑटोमेटिकली दूसरे देश के बारे में भी हो जाती है। ये भी होता है, ऑटोमेटिक होता है। यहाँ कोई क्लेम करने की बात मैं नहीं कर रहा। क्वालिटी कई तरह की है, लेकिन जब आप बात करते हैं सिटीजन क्वालिटी की, उसमें सब बातें आनी चाहिए। आप किस तरह के सिटीजन हैं, आपकी क्या लेवल है, क्या एकेडमिक्स आपने पास किया है, कितना प्रोफेशन में आप कौन से में हैं, कितना आगे बढ़े हैं, आपने जो भी काम किए हैं वो किस लेवल के हैं, आपका माइंड किस लेवल का है, आपकी सोच किस लेवल की है, आपका रहने का स्टाइल कितना सिंपल है या कितना डिफ़िकल्ट है या कितना लग्जूरियस है, आप अपना समय किस तरह से पास करते हैं या उसको यूज़ करते हैं, और भी सभी बातें। आप समाज को क्या समझते हैं, आप परिवार को क्या समझते हैं, आप देश को क्या समझते हैं, आप विश्व को क्या समझते हैं, ये सब बातें काउंट करती हैं हमारे अपने क्वालिटी में, जिसको आप कैरेक्टर या चरित्र भी कह सकते हैं। आप एक बार क्वालिटेटिव हो जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली क्वालिटेटिव चलेंगे और आप हर चीज़ को इंटेंसिवली चेक करेंगे, डिटेल्स में जाएंगे, उसमें देखेंगे क्या सही है क्या गलत है। आंख बंद करके काम नहीं करेंगे। सोचना बहुत बड़ी बात होती है। हर व्यक्ति सोचता है, ऐसा नहीं है कि सोचना, सोचने का मतलब है, सोचने की एक स्टैंडर्ड है। हर काम में आप एनालाइज कीजिए, उसको समझिए, हम ये क्या कर रहे हैं, इससे हमारे देश का क्या फ़ायदा या नुकसान है, इससे विश्व का क्या फ़ायदा या नुकसान है। विश्व का जब बात आती है तो ह्यूमैनिटी से आ जाती है। अगर हम एक अच्छे ह्यूमन नहीं बन सकते, इफ़ आई कैनॉट से दैट आई हैव डेवलप्ड माई सेल्फ एज अ गुड ह्यूमन, then I cannot be a good citizen of this world, and I cannot also become a good citizen of earth. Citizenry applies to everywhere. Maybe formally I am not citizen of world, but practically I am citizen of world, and I have to think for this world. That is one quality part. And I say, okay, I don't care for world, I care for my nation only. Also, that is true, but that it's a little different because you become a part of this world only. You don't want to expand your mind to whole world. आप दुनिया में अपने देश तक सीमित हो जाते हैं। आप नहीं जानते, आप नहीं सोचते कि विश्व भी आपका है। ये सोच जब तक नहीं बनेगी, आप विश्व के बारे में सोचेंगे नहीं। और आप एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, जितना पोल्यूशन आज है पूरी दुनिया में, हमारे देश में, वो सब इसीलिए है कि हम सब ने मिलके इस ज़मीन का नुकसान किया है। इस ज़मीन के पानी का नुकसान, इस ज़मीन की हवा का नुकसान, और बहुत चीज़ें ऐसी, हमने पेड़ काट दिए, ख़राब कर दिए, सब कुछ कर दिया, पानी ख़राब कर दिया, फिर भी हम शोर मचाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। आप अच्छे हो सकते हैं, आप ख़राब नहीं हैं, लेकिन किस लेवल के हैं, ये बात आ जाती है। अच्छे कपड़े पहनने से, बड़े बड़े ग्लैमरस वर्ल्ड में रहने से, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी देने से कोई क्वालिटेटिव नहीं हो जाता। आपके पास बहुत कुछ हो सकता है, वेल्थ हो सकती है आपके पास, आप सिटीज़ भी ऑन कर सकते हैं, आप बहुत बड़े व्यक्ति भी हो सकते हैं, आपको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, परंतु क्या आपके पास क्वालिटेटिव कैरेक्टर है? दैट इज़ वन पॉइंट। क्या आप सबको खरीदने में बिलीव रखते हैं या आप लोगों की हेल्प करने में बिलीव रखते हैं? आप समझते हैं मैं ही माइट होनी चाहिए, मैं ही सबसे पहलवान होना चाहूँ, मैं ही सबसे आगे होना चाहूँ, क्या ऐसी सोच रखते हैं? या मैं इस दुनिया को सुधारूँ,
अपनी शक्ति से, अपनी मेहनत से ऐसी सोच रखते हैं. One has to think on, one has to decide with what criteria one person wants to live in this world, to enjoy this world, to help this world, to help improve Earth, to help improve society, to help improve planet. Quality is very important in every person. I'm not talking of only vote. I'm talking of work. I'm talking of continuous improvement, just like we say, continuous professional development, CPD we call. Same way, I should say, what is CPD and what is life CPD? I'm talking of life CPD. Life CPD can improve only when you improve self. If you control self, then others may follow you. We have this point. What is leadership? Qualitative leadership. Leadership doesn't mean that I have to command on you. It doesn't mean that I have to be political leader. It also doesn't mean that I have to be number one in whatever profession I work. That is your personal achievement based on your past experiences, past performance, past knowledge, additional knowledge, continuous development of work, continuous development of personality. And personality doesn't mean good clothes, attractive clothes, or expensive items, or big cars, likewise, or otherwise. Personality means your simplicity, your high level of mental capacity, your high level of helping this world, your high level helping yourself. And when I say helping yourself means I help society because I am also part of society, very much integrated part of society. हमको ये सोचना होगा कि अगर हम अपनी सीमित सोच रखेंगे जो लोग रखते हैं कि मैं तो इस कंट्री का हूँ, मुझे इसके बारे में सोचना है, मैं इस राज्य का हूँ, मुझे ये सोचना है, आप आगे नहीं बढ़ सकते. सब ऊपर से आए हैं, वो अलग बात है. कोई किसी को दोष को मानता है, कोई किसी देश में घुस गया, लेकिन जमीन का देश तो एक ही है. इस बात को लोग समझते नहीं हैं. हम किस देश में हैं वो अलग बात है, वो ट्रैवल पर्पस के लिए है, वो रहने के पर्पस के लिए है, वो वीज़ा पर्पस के लिए है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम कहीं तो रह रहे हैं. हम पासपोर्ट नहीं भी रखते हैं, हम ट्रैवल नहीं भी करते हैं, फिर भी हम कहीं तो रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं. अर्थ तो मेरा विलेज है ही, अर्थ तो मेरा नेशन है ही. उसका नाम बेशक आप ना दें, उसका पासपोर्ट बेशक आपके पास ना हो, लेकिन वो वहाँ से कोई आपको एग्जिट नहीं दे सकता, वहाँ से कोई आपका कैंसलेशन नहीं कर सकता, वहाँ से कोई आपको कह नहीं सकता कि मैं आपके साथ ये कर सकता हूँ, नुकसान आपका. पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, विज्ञान अलग है, दुनिया अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी सिटीजन सभी हैं. सिटीजन का सम्मान कैसे होगा? सिटीजन का सम्मान तभी होगा जब सिटीजन अपना काम करेगा. अपने काम का मतलब क्या है? अपने काम का मतलब है जितने भी आपकी कैपेसिटी है, जितने भी आपकी पावर है, शक्ति है, उसको आप ह्यूमन और ज़मीन के अच्छाई के लिए लगाएं. To develop this world, development doesn't mean concrete development. Development means useful development, educational development, health development, humanity development, character development, truth development. फॉल्स की दीवारों को गिराना है, गिराना पड़ेगा, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते. ये बात भी समझना बहुत जरूरी है कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ. सब झूठ बोलना चाहते हैं, बोलिए, किसी का क्या ले लेंगे. झूठ डस नॉट एग्जिस्ट, false does not exist. Only existence is allowed to truth. Truth is very powerful tool for everybody because it does not spoil, it does not pollute mind. It may be profession or otherwise if we use false everywhere or to as much as possible locations, as many as possible locations, we can't lead good life. Mind cannot be free from complications. We have to keep mind set clear in terms of what happens. And that is where we should not remember all time that I am here, I have to live. We are here. We shall remain here until we leave this planet. So
That is time when we cannot come back. But here I'm talking about responsibility, accountability, liability. Everybody is responsible to work in this world, to work in your own country, your own area. If you are well qualified, if you have caliber, if you have capacity, if you have tranquility, if you have homogeneity, and if you can handle others people, and if you can do your own studies, lot qualitative people can happen. Quality is completely absent. I can claim this openly. Of course, saving something where 0.001% people are there who believe in quality, but even those professionals who should be expected of quality, who should be who are expected to deliver quality, they do not care, and it is unfortunate. And because of various interests involved here in childhood or in education areas years, one learns so many terms. One should also learn quality, though quality has been there in teaching, in education, in many professions, but that is still very rare. Talk cannot help. Again, I say talking is a must, but it is not exclusive must. If you talk something, then you have to care also about that. So simply speaking and escape does not serve any purpose. If I speak something, it should be based on facts. If I do something, it should be based on all facts, not single facts. एक बात करके उसी पे मैं घूमता रहूं, कहता रहूं नहीं यही ठीक है जो मैंने कहा है, उससे तो बात नहीं बनेगी। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी बात भी गलत हो सकती है, and I have to check myself, I have to examine myself. That is very important point. I am not going to appreciate that I have done good. No, I don't need an appreciation, expression. But I have to check myself, because I can check myself to my best. Nobody can check my work to that extent, because I know everything about that work. And when I say I, again I say it's for all you people, all you people. Very significant it is. And if we cannot understand, हमारी बात समझ नहीं आती, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने का मतलब क्या है? प्रोग्रेसिव वर्क, इंटरेस्टेड वर्क, keeping society intact, keeping nation intact, doing everything that is good for this country, for whole world. My first approach is country, because I am bound by country, but I am not bound by whole world. Whole world is my open home, though I cannot go there without visa, but my mind can go, my conscience can go, my opinions can go. I can use internet facility nowadays to communicate to whatever people, wherever they are. And that is facility, that is privilege. Currently it is, but in future it may further develop. It may further develop to immense uses. On other hand, opposite sides, reverse one is also a serious concern. People don't realize value of writing, value of reading, value of conference, value of verbatim, value of interaction. Many people do not know. It's not their fault. It's fault of system, because system has made humans slave, rather than humans should have used system independently. This system has become soulless, we can say. When people are not serious, citizenry is not serious. In that case, nation cannot move forward. And this is not challengeable. This is factual. We should be serious about everything in life. And if you are not serious, we cannot say we can give quality. And again, I am saying seriousness doesn't mean impressive or serious face. It means serious actions, serial actions. Whatever we plan, whatever we do, we should not be lazy to act on that. We should not say, "Oh, I'm tired. I'm not doing this now. I'll keep it for next day." To some extent, that is practically possible, but not always. Quality is, again, I say, a requirement. Even if you do not want, but work wants.
Time wants, your people wants, and you have to help your people if you can have capacity during morning time for performance, not simply walking, but mental capacity that is very, very securely required. Why is it securely required? Because whatever is required is secured. I cannot say, don't work like this. You have to decide. Concentration is biggest property with every human being. And coordination also is very much supportive. But tell me how many people coordinate. Tell me how many people concentrate. Education means power of concentration. If I cannot concentrate, what is purpose of my power? What is purpose of my, you can say, education? What is purpose of my conscience? What is purpose of my claims? If I cannot coordinate properly, and coordination is also a kind of specific technology without which many technologies, many subjects cannot interlink together. You have a kind of, you can say, signalless network around you. Now, I'm not talking of internet. I'm talking of human internet. Everybody is specific, particular, and engineers, medicos, all advocates of law people, and all others who can directly involve with profession. They are different people. But are they really? Again, I say we consider different people, but are they different? That is, you can say, a kind of question which is of higher value, higher profile, higher degree, and nobody can answer to that question. Only one can answer that question, and that is self. If I consider that I'm not a quality person, then I have to convert myself from ordinary person to quality person to coordinating person to character person. It should happen, but it does not happen. Very few people believe in quality, and if only those very few believe in quality, at end nobody shall be there to check. And that's what I say. Citizen has to check its powers. Citizen has to check its fundamentals rights. Citizen has to check duty on account of constitution and on account of society at large. What you have to do? Are you suitable for that, or you do only for food? You're not free in mind. What's fact one? Everybody has to know this. Therefore, I again say quality is not a definition. Quality is a wonderful word. If you are qualitative, you won't be tired. Your mind shall be happy. You will not feel otherwise that "Yeah, I've been condemned." No, you are upgraded if you always are regular in your quality system. But it doesn't happen. We say only, we do not do. And it's for everybody. People only speak, they don't react, they don't give results. It is very, very, you can say, bad state that we only speak, we don't do, and that should stop. But shall it happen? And I am sure it shall not happen, never happen, because we are human beings. We don't analyze what is said by someone. We don't analyze why I'm talking about this. People don't want to spend time in languages. They want to just speak something and say it is done. Done is one part, not done is another part. We have to understand that course of action. What happens? What doesn't happen? How can I help? How can I not help? How can I check myself? How can I upgrade myself? How can I measure myself? Am I am I interested in keeping life safe, keeping work areas safe, good housekeeping? Can I keep my mind housekeeping safe? Can I stop jealousy within myself to develop?
I don't want jealous to develop in me. Everybody has a right to progress. Why should I fear about others' progress? And likewise, so many questions you can raise from different fields and answer them. Or you seek answers from others if you cannot answer yourself. And that is why I say it is not physical requirement, it is basic requirement. One should be qualitative. One should think qualitative. One should work qualitative. One should do everything that is expected of someone. So, my dear friends, I won't go much beyond except few minutes more. Let us say क्वालिटी को समझना, मैं फिर कह रहा हूँ, क्वालिटी से मेरी बात करने से आप बोर हो जाएंगे, आपको नींद आ जाएगी, लेकिन मैं क्वालिटी क्वालिटी करना नहीं रुकूंगा, क्योंकि क्वालिटी करने का मतलब है बहुत मेहनत करना। हो सकता है कहीं आपको प्रॉफिट का लॉस भी हो जाए, लेकिन ये आवश्यक है। आप इससे बच नहीं सकते। बचेंगे तो खुद खराब करेंगे अपने आप को, क्योंकि आप वो नहीं कर पाएंगे जो आपको करना था या करना चाहिए। इसलिए क्वालिटी बहुत बड़ा इश्यू है। आज हमारे भारत में और दूसरे कंट्रीज में भी हम लोग क्वालिटी को वैल्यू नहीं देते आए हैं और ना ही दे रहे हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है। क्वालिटी का मतलब है सेट एवरीथिंग राइट इन ऑर्डर, order of requirement, and everything means human also. If I don't understand what I have to do and what is sequence of my working, I cannot apply that. And without application, nothing can be called stay there forever. Your dead body is of no use. It happens. But what can you do? If some people lie, they don't want quality. They want frictions of our society. It should happen. So, my dear friends, I would say don't miss your concentration. Do something for your country. Do something for yourself. Do not think only for money making. Think of national making. Think of world making. Think of something that is not very common. You should be a different person in your crowd. You should give solutions rather than raising issues, and there should be people who receive your solutions. It is very important part, very important item. People should understand that, should realize that. मैं बात को ज़्यादा लंबा ना बढ़ा के ख़त्म करूँगा। 38 मिनट होने जा रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट है, क्वालिटी के बारे में सोचिए, आगे सोचिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, किसी भी फील्ड में आगे हैं या नहीं भी हैं, तब भी आप सोच तो सकते हैं। जय भारत, फिर मिलेंगे।